recommending, he may or may not. But at least he would record reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, Ajay Sahab, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches. That is power universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not answering. Carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your submissions. Just note the question. This thing, I may add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I'm being condemned. I'm not being heard. Who is the that? party is not being heard. Who is when you're using the word I? Who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, sir. Tahammul. The litigant. That leads me to another question. Your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? No, I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer, Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The Constitution must be upheld. And I am also saying that I'm sure with such eliminaries sitting there, the whole object is that, first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. Khwaja Sahab, I'll refrain from that. Let us proceed Khwaja with Sahab, that. Yes, sir. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and 2 senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship has possibly not, I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Instead of Section 3 is a totally different thing.
it takes away the powers of this honorable court. Why it does not, instead of Is it your argument? let us clarify. Is it your It argument takes that away Section 3 affects the judicial powers of this court? yes, ma'am. Curtails judicial powers of this court because this court means the Chief Justice and all the judges. judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's my point. I've been trying. 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. That too an exercise of administrative powers. Yes, ma'am. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I've requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position, so many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. In fact, to be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? Far right. Please. What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers. No. In fact, the powers will be whittled down. As if this law goes through, the powers will be whittled down, but we will explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. I will continue. Let me continue. Let me continue. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice has been. I think that's the moot question. The answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is the Chief Justice and so many other judges. Faiz will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So, आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not even heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side and I'll be out. So the question of 184.3 will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is present. Then next is 4, interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object for say I object to this provision, or you endorse it? I will say this thing, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges.
Point noted. Because this is very strange, because all judges are equal. Your lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than आगे 5. बढ़ें, as I Then there's a understand, question of appeal, and which is a very relevant point. Ajay Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your lordship did not. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the parliament. About how the benches are to be आगे बढ़ते हैं. I will. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you sitting together feel that under 191 that it should be changed, then it is your functions. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is Sir, the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Mani sir. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question, please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. भैया साहब, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर, ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लीजिए। मैं नोट कर लिए जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता हूं। ठीक है, अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट आई हैव वेरी नहीं, आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative
competence under Article 191 trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप note कर लें, जवाब ना दें. Not through ordinary Just for if I will really request my colleagues that they are including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2-member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? बहुत अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों में Sir, it is गलत है तो फिर वो भी गलत है. It is not we'll answer this thing that what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so. But there is a procedure provided. We'll answer that. भाई साहब अभी जवाब की जरूरत नहीं है. आप प्लीज I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. Khwaja sahab, you have collected 100 questions. Just here, the Law Reforms Ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clog on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. Well, you have challenged the law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned,
Is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in clause 2, whereby my 184.3 application will be disposed of? Sir, the way I was taught law was not the counsel asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations, tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then you go and move a bill in parliament. We are saying, are you opposed to section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, You first say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184.3. Okay. That, and this appeal, this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has been given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184.3 is a substantive provision of the constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you has two parts. So the first part is this question, this order which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that
this law the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी, आगे बढ़ते हैं। छह को पढ़िए, Six है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, application pleading urgency or seeking interment filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been treated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, you say, in a civil court into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra-vires. Isme Khwaja Sahab, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important.
Sir, we will certainly answer your lordship. So, but please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Raza Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what sir. my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence working of of the the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Yeah, Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and, for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would that lead us? With due respect, my lord, my lord. ख्वाजा साहब, ये एक बात सुनिएगा, इधर एक क्वेश्चन. आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को. आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो. आप पढ़ ही नहीं रहे हैं. मैं अभी पढ़ लेता हूँ सर. ये सवाल बड़े पर्टिनेंट. आप हर चीज आप नोट कर लेना. नोट कर भी दिया मैंने सर. करिएगा ना. मैं मैंने शुरू में ये कहा था. आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें. मैंने शुरू में ये कहा था. आपने शहीद साहब और जो ये आप कह रहे हैं, जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए. ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा. एक बात और नोट कर लीजिएगा. आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाजा साहब फिर आप अपने लिए मुश्किल आप जरा सुन तो लीजिए ना. आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना. ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए. जरा सुनिए प्लीज. आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो. हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए. आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं. हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके. ठीक है, हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं. हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है. ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है. जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट. हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें. तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर. तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है. आपको आईनी जवाब हर देना है
कि ये इश्क, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो, राय आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम आपने एक सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए, अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग्स की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। जब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और इसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है, माँ सिवाय वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गूमेंट से हम ये समझें कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी। सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा। बात ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको। इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me,
and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना. Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया. Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी. मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ उस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ, और वो है, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब, everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम, एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आप ये पिटिशन लाते हैं, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूँ. तो बराए करम, हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए. अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, बेहतर कर सकेंगे. बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम. अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे. शुक्रिया. मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है. अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों. अग्रीड सर. जरा अग्रीड, आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूँ. इनफरादी नौयत की, अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगें तो वो बेचारा कहाँ जाएगा. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ. रेकोडिक का आ गया, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया. मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी. हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया. अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है. अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे. अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है. आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए. इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना है. जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए. मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा. आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें. मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है. आप anyway, मैं ये आंसर कर दूंगा. ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा. और वो 2 कंडीशंस हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से, अगर we can go back, independence of the judiciary is a fundamental right.
Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter, then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि और इसमें इसी के साथ एक सवाल ख्वाहिश साहब इधर हूँ जी जरा 5 मिनट लगते हैं आपको मुझे देखते नहीं सर आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में, तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे, डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ फाजिल साहब, टू योर राइट हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, द एक्ट हैज बीन सस्पेंडेड, वेदर इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑर्डर full court can be constituted or not. ये भी जरा देखें। Court can be constituted or not. आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम shall we proceed to the next council? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने तो प्रपोजिशन कर दी, ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटिशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ। To write of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में and 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई जी। चलिए बताइए। My lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court, at various point of time, has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है, ठीक, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आते, हमारे पास बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My Lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में, जरा पढ़िए 189. जी. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law,
be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, Yes. not the Supreme Court. Yes. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए. अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है on all My lord, other courts, which means high courts and Unless your lordship allows me to make a submission, other courts I की will बात कर not, रहा हूँ. no, I will not be able. ठीक है, I, आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें. Please, lordship. If I may ask Ji. you, Sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That of would be a constitutional law? fallacy, it will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court. And unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. मेरे ख्याल में आप मेरा सवाल सर समझिए नहीं सही. मैं आपको आ रही हूँ सर, मैं उधर आ रहा हूँ. नहीं, मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए. यकीनन 5 मेंबर बेंच का जजमेंट 3 मेंबर बेंच पे बाइंडिंग है, यकीनन. अब हम आर्टिकल 189 की बुनियादी बात कर रहे हैं, अदर कोर्ट्स. अगर ये बात है तो ये अब फुल कोर्ट, इससे बड़ी तो फुल कोर्ट नहीं हो सकती है ना. हमारे ऊपर कोई प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, आप समझ रहे हैं. अगर यही इशू किसी लार्जर बेंच ने फैसला कर लिया होता वो हम पे होगा, मगर एज अ रूल अदरवाइज जजेस डिसेंट भी नहीं कर सकेंगे ना, वो तो बाइंडिंग है, डिसेंट भी नहीं कर सकते हैं. तो अब आप जरा वजाहत में ये कर रहा हूँ, ये नहीं है कि 4 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड, 2 मेंबर बेंच डिसरिगार्ड कर देगा 5 मेंबर बेंच के फैसलों को. बिल्कुल ये मेरी, आप इसका मतलब वो बात समझ नहीं पाए. अदर कोर्ट्स, मगर अभी तो वो मफरूजों में हम नहीं जाना चाहते हैं. ये जो मौका है इस पे पूरा कोर्ट बैठा है, तो ये कोई प्रेसिडेंट जब आप साइड करने निकलेंगे तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा जब तक आप आर्टिकल 184(3) का दरवाजा नहीं खोल पाए. ये इम्तियाज साहब, इसको मैं जरा सिंप्लीफाई कर दूं एज आई हैव अंडरस्टूड. सर, ये पूरा लॉ पढ़ लिया गया है, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं. एक, पहले चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार था कि डिस्क्रिशनरी चॉइसेस करे, ठीक है ना. उसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया, रेगुलेट कर दिया. दैट्स ऑल दैट द पार्लियामेंट हैज डन, कि उन्होंने 3 जजेस को इकट्ठा कर दिया. कोई बाहर का कोई भी नहीं आया. इट्स स्टिल द चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस. इसमें तो किसी का भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो इंटरनल या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है वो मजबूत हो रही है. सेकेंडली, एक राइट ऑफ अपील उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके पास पहले कोई राइट नहीं था. नाउ इस 2 चीजों के अलावा इस पूरे कानून में कुछ नहीं है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए हैं? ये तो अगर योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड, सुन ले, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया है, ये तो आपको सराहना चाहिए. ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा. हाउ डज दिस respond to this? May I respond? और सिद्दीकी साहब, इसी में मैं ऐड कर दूं. सवाल ये है कि अगर
आपके मुताबिक चीफ जस्टिस की अनलिमिटेड पावर्स ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर जिस तरह माय लर्नेड कॉलीग इज जस्ट मेंशन्ड कि अगर वो विटल डाउन कर रहे हैं पावर चीफ जस्टिस की, एक की जगह 3 लोग 4 लोग मुशावरत के साथ चलेंगे, तो एकदम इसलिए कि चीफ जस्टिस की पावर कम हो रही है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी एट स्टेक हो गई है। ये नहीं देख रहे कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो बढ़ गई है, कि एक कंसेंसस से आगे चलने का इंतज़ाम हो गया है कि आप लोग सोचें कि आगे कैसे चलना है, कोलिजियल तरीके से चलना है। सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है, कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्योंकि अब सब जगह कहीं जाएं तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है, कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। तो ये हो रहा है, तो इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की एक चीज़। तो इस चीज़ को ज़रा देखिए कि इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ, कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, इसका भी जवाब जरा दीजिए। Mr. Siddiqui, the fundamental question here is, who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. Hey, I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of this, the Supreme Court? It is a function, or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying. सिद्दीकी साहब, एक इसमें ज़रा मैं ऐड कर दूँ। 191 आप पढ़ते हैं ना, तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर बना सकते हैं। तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे। पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता। सुन लीजिए, नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप? हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून। जजमेंट लॉ। नहीं, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कन्वेंशन। सुन लीजिए, टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है, आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे। अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट? तो आप हम एंट्री 55 में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं। अब इसको ज़रा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन 7 पढ़ा जा रहा था ये वगैरह, हमारे पास अर्जेंट लगते हैं, कितने लगते ही नहीं केसेस। ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता, अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं, वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर, 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ, तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है। इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में रास्ता आ गया। 55 एंट्री, सारा सवाल एंट्री 55 का है। एंट्री 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकते, उसमें बताइए कि क्या गलती है। सिर्फ इतना सा सवाल है। If your lordship allow me a breather, सदीकी साहब एक सवाल, I will answer all these questions. बिस्मिल्लाह कीजिए। सदीकी साहब सांस ले, My lord, I would answer all these सांस questions. लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the chief justice. I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया। चेंज कर दे सर, एक मिनट, रूल को चेंज कीजिए। सुन लेना सर, रूल के तहत अब रूल क्या होंगे? अगर आप 191 पढ़ेंगे, आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ताबे है। ऐसा होगा कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में। अच्छा, इसकी I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. इसकी कहीं और ममालिक में, बात सुने प्लीज, इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं? किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं? मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे दें।
what the theme appears to मैं be. अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए। The theme appears. I just a sentence. Just one. One question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा fundamental right जो है your lordships in a number of judgment have held. Judgment तो बिल्कुल सही होती है सर. देखिए आपको बताता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, I have a right to be dealt in accordance with the Constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है, इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी। 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना, अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सिद्दीकी साहब, ये सवाल लिख कर रहे हैं आप? पता नहीं हम तो बोली जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। साथी खड़े ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 ऐसे नहीं कहिए, पढ़िए, एक पढ़िए और बताइए। I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है, चलें। Mr. Siddiqui. Please, your lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please, your lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहा है हमारे सिस्टम को और आम आदमी की जिंदगी आसान कर रहा है। सर देखिए, मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया। सर सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूँ। आप इससे मुखातिब हो जाए ना। I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूँ। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूँगा आइन पढ़िए। अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विथ है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular,
No action detrimental to life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why have you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordships. Qazi साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें. आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था 191 में. यही प्रोपोजिशन. अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें. 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है. इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली. थैंक यू माय लॉर्ड. आई एम इंडेटेड टू माय लॉर्ड. दिस इज द प्रोपोजिशन. एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़ लीजिए ना सारे आर्टिकल के ऊपर आ जाए ना फिर आप. आर्टिकल 10A. आर्टिकल 10 पढ़िए. आर्टिकल 10 सॉरी माय लॉर्ड. 9. ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं. वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. तो बहुत ही नॉवल आर्गुमेंट है. आपने वैसे जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the. जैसे मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था. शुक्रिया. लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे हैं. I have to assist you the way the law in this country is developed. चलते आगे ना. देखिए साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए. आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले. आइन तो कहते आइन के देखे बगैर. आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ. सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस. नो आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर. नो आई एम. अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करो. सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ना बड़े ऑफ 4 हो गया. 9 कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद 10 में क्या है? 10 में कौन सा? नो, ये तो अरेस्ट. नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड. इससे क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर मुझे आप प्लीज. नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा. नहीं सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इट्स पब्लिक मनी. ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस. सॉरी, ऐसे नहीं आर्गुमेंट्स होंगे. क्या साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ. अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था. वो बता दीजिएगा. मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है. मैं क्या ये इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा. आप चाहते हैं कानून आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो. मैं नहीं चाहता. आपने दिया रूल्स के अंदर. नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना. हमने छोड़ दी सर. आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे the power has been given to the chief justice and two senior most judges. ये बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब को बहुत पावर दे रहा है.
Let us have a look at Article 10. Article 10 तो देख लीजिए सर. एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का. सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो. Lord, your lordship held that when a law is made or action is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना. सर मैं आपको, आप मुझे लागू करेंगे दे रहे हैं, इजाजत बताइए. The law, the constitution requires, under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This has आपने हमने जो आपसे शुरू किया था हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी. सर मैं तो आप जवाब दो. नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा. क्योंकि आप देखिए, मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है, मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया, ये बता दें बस. अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इन्फ्रिंज हुए हैं. पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199 यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए. सर मैं आपको नोट, आप I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. सर मैंने पढ़ा आपके सामने. बस यही आर्गुमेंट आपका. सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे. नहीं आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप. My proposition, मुझे आप, my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that जब हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे. The constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires a petition. ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया. 3 different organs of the state हैं. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. और यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक, समझ गए. अगला point. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है, आप नोट कर लें. मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन. ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स. ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है. जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं. अच्छा, सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें. जी सर, नहीं सुन. या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं. ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं. हम यहाँ तो कोई पोल अगर हमें खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें. आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं. आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए. हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट. योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर दें. अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के
फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहा है। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप अनइलेक्टेड जजेस कर ले, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी। भले आप रिफ्यूज भी करें वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात बेबस नहीं है। एक सेकेंड अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट। मुझे अभी तक आपने ना आर्टिकल्स दिए हैं ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए प्लीज बताइए। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि व्हेन ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब समझ आई आपकी बात। वो ये कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid reasons. सवाल ही नहीं सुन रहे आप, जवाब का फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. And sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution, that independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say no, 5 judges is okay with us? 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section कौन सा है वो आपका? Section 4. Tomorrow Parliament says ये एक law बना देती है जी. I don't know. Family matters are to be heard by a bench of no less than 7 judges. Is that?
Is that part of access to justice? May I- Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Need, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें। आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहते। फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, ओहो, एक सेकंड, अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन आउटकम्स इन केसेस एंड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग बेंचेस, दैट इज ए कंप्लीट इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, Dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या बैलेट होता है या रेफरल। Countries like Nepal, you start of the calendar year पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं। ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है। आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if you go literal text of the Constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is Constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament
make in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law. Can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल आप दलाइल देके ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed? जी प्लीज। I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का मैसेज जवाब दे रहे हैं। May I proceed? प्लीज डू सो। supplemental आप चलें, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। My learned brother asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. So देखिए साहब जरा एक क्वेश्चन, आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के benches बनाएंगे as per this law, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है। My lord, just one minute. May I request my brothers? इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए। Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है। The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने आर्ग्यू नहीं किया अभी तक। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोकें, आप क्या मुझे आर्गुमेंट सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट। आप बताएं ना, हमें शिक दें कायरीन की। डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में। इसी पे आ जाए, यही सवाल है। देखिए मैं आप देखिए, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी, Article 176. जी पढ़िए। My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President.
What this article says is that one of the first steps is the appointment of the Chief Justice. He is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please, chaliye na, don't state the obvious, it's written there. This is आप- really, आप- no, यही तो sorry कि to मुझे say, अफसोस हो रहा है। आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है? सर, हमने मैं ये आप अवाम की ऐसी खिदमत के ऐसी लिए- बातें तो ना करें हजूर। सर, आप मुझे आर्ग्यू, आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just Don't giving need your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. But I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is I yes. will not answer your question. It We are will- not I here. am answering- We I are am not here in a answering. theoretical realm. Please don't. No, now this is will. not fair. We are not here in a theoretical realm to us discuss proceed what for- may or may not Let happen. us We are proceed- faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. It is provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state Profound. as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए। अपॉइंटमेंट के लिए, Constitution- रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं साथ। सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जेक्टिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना। हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए बस। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191। उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from Act of Parliament. Yes, it is. Law is So this is something I've never heard before. Yes, sir. May allow me to assist you.